Namaste. I welcome you all to our today's live discussion on other financial services, that is Unit 26 of our subject Retail Banking and Wealth Management. आज के मैराथन सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप आपका ऑडियो और वीडियो चेक कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग डिस्कशन अगर आपको कोई क्वेरी हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज मेक द यूज ऑफ चैट बॉक्स सो दैट वी कैन रिस्पॉन्ड योर क्वेरी इमीडिएटली। जैसे आपको अवगत है, हम जेआईबी और सीआईबी के लिए डेली फ्री लाइव क्लासेस यूट्यूब पे कंडक्ट करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट हो जाइए एंड साथ साथ ये मैसेज आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी कन्वे कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकेंगे। आज हम अदर फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसी के पहले कल हमने डिटेल में एक मैराथन सेशन लिया था जिसमें यही यूनिट पे हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हमारे कल के डिस्कशन में प्रेजेंट नहीं थे या जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, प्लीज एक बार हमारा वो रिकॉर्डिंग या वो वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड आपकी कंटिन्यूटी भी बरकरार रहेगी एंड वही आपको एग्जाम में काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर टुडेज डिस्कशन। आज हम इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। कल हमने म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था, इंश्योरेंस के बारे में भी हमने डिटेल डिस्कशन किया था एंड इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट we will continue in insurance now. Insurance is a financial risk management tool in which the insured transfers a risk of potential financial loss to the insurance company that mitigate risk in exchange for a monetary compensation known as a premium. इस सेंटेंस के पहले हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बात करते हैं एक बार डिस्कस करते हैं। अगर हमें कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को या उनके एजेंट को अप्रोच करते हैं। एजेंट को हम बताते हैं कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। इन दैट केस कंपनी हमें एश्योर करती है कि आप अगर 5 लाख तक का इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो आप अगर कोई बीमार हो जाते हो फॉर वट एवर मे बी द रीजन, कंपनी आपको 5 लाख तक कॉम्पेंसेट करेगी फॉर विच यू हैव टू पे सम अमाउंट एज अ प्रीमियम। ये जो मैंने आपको बता दिया, द सेम थिंग इज वी हैव टू कीप इट इन माइंड फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इंश्योरेंस इज ए फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट टूल in which insured it transfers a risk of a potential financial loss to the insurance company. Who is insured? Person who is taking the insurance policy is insured. So insured उसका जो potential financial loss है कि फर्दर स्पेसिफिक पीरियड में अगर मैं बीमार हो जाता हूं तो मेरा जो खर्चा होगा, दैट इज रिस्क ऑफ पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस, वो हम किसको ट्रांसफर करते हैं? टू द इंश्योरेंस कंपनी। कि इंश्योरेंस कंपनी को हम वो रिस्क ट्रांसफर करते हैं एंड दैट मिटिगेट, वो कंपनी है वो रिस्क को मिटिगेट करेगी इन एक्सचेंज फॉर ए मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन नोन एज द प्रीमियम। So no need for me to explain in detail than this now. Now insurance policies are of different types depending upon the risk they mitigate. Broad categories of insurance policies are health insurance, life insurance, asset insurance, etc. So अलग अलग तरह की कंपनीज अलग अलग तरह के रिस्क लेते हैं। Some insurance policies taking care of your health, some insurance policies taking care of your life, whereas some insurance policies are taking care of the assets. जैसे हमारे पास कार है तो हम कार का इंश्योरेंस लेते हैं, घर में जो सामान है उसके लिए हम अलग इंश्योरेंस लेते हैं, अगर हमें हमारा मकान सिक्योर करना है तो हाउसिंग इंश्योरेंस लेते हैं। इस तरह से अलग अलग कैटेगरी के इंश्योरेंसेस हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट
इंश्योरेंस पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हो जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस, विच इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट सेक्टर इन इंश्योरेंस बिजनेस। What is the meaning of health insurance? It is a contract between the insurance company and the insured person to cover the medical loss that might arise from illness, accidental injuries, surgeries, and other medical compliances. Health insurance क्या है? It is a contract between insurance company and insured person. हमने already डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है कि ये दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट, ये इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योर्ड पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि अगर जो इंश्योर्ड व्यक्ति है उनको अगर कोई मेडिकल कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ देयर एनी इलनेस या बिकॉज ऑफ एक्सीडेंटल इंजरीज या सर्जरीज या कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो, उसकी वजह से जो खर्चा इनकर करना पड़ेगा, that will be paid by the insurance company on the basis of the premium paid by the insured person. This is a very popular among the middle class, and this is emerging, very important statement. This is emerging as the fastest growing segment in non-life insurance company. Non-life insurance industry. Companies are providing individual as well as floater policies. एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि what is the fastest growing segment in non-life insurance industry? Health insurance industry is the fastest growing segment in non-life insurance industry. आपको इसमें ध्यान में रखना। The health insurance companies can be dividing into following three categories. First, standalone health insurance companies. It means these companies are doing the business of only health insurance policies or only health insurance business they are carrying out. जैसे कि आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। Then health insurance from general insurance company. जो जनरल कंपनी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, along with other types of activities, they are providing health insurance also. And third is health insurance from life insurance companies. जो कंपनीज लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचते हैं, लाइफ इंश्योरेंस एक्टिविटी, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में एक्टिव हैं, वही कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस का भी बिजनेस करते हैं। इस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो इस तीन कैटेगरी में डिवाइड की जाती है। नाउ वी आर कमिंग टू द लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। These companies are offering various products to mitigate the insurance requirements of different kinds of investors. The broad categories of life insurance products are, आपके पास अगर आप कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हो एंड आप अगर कोई एजेंट से अप्रोच करते हो, तो एजेंट आपके पास जब आ जाएगा, ही विल ऑफर यू, पहले वो आपको पूछ लेगा कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, what is the purpose of your investing in life insurance policy, and accordingly on the basis of your requirement he will offer you the various products. कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे कि जिसके लिए आपको बहुत लो प्रीमियम पे करना पड़ेगा एंड वैलिडिटी ऑफ इंश्योरेंस विल बी फॉर अ लिमिटेड पीरियड, दैट इज नोन एज अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। Whereas in certain cases वो आपको ये बताएगा कि आपको हर साल स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे करना है, and after that expiry period of that policy is over or your policy is matured, you will get a lump sum amount if आपको कुछ भी during that period अगर if nothing is happened to you। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर उस इंश्योर्ड व्यक्ति का अगर डेथ हो जाता है, ही विल गेट द एंटायर। इस तरह से अलग अलग तरह के पॉलिसी सुटेबल फॉर द इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर करती हैं। नाउ लेट अस सी इन डिटेल। सबसे फर्स्ट एंड ओल्ड पॉलिसीज, एंडोमेंट पॉलिसीज। As endowment policy is a life insurance contract designed to pay a lump sum amount after a specific term on its maturity or death, whichever is earlier. जो मैंने आपको अभी क्लियर कट बताया था, this the name of that policy is endowment policy. Second is term insurance policy, which is a very popular form of policy nowadays because यह प्रीमियम बहुत कम रहता है and compared to that premium, huge amount is covered.
The main purpose of a term insurance policy is to provide a financial security at a low premium to the nominees or beneficiaries in case of policyholders' unexpected death. The policyholder does not receive any payout at the end of the term except for the tax benefit available during the policy tenure. Term insurance policy, no need for me to tell you in detail. Normally, this validity of this policy is for 1 year. आप जितने पीरियड के लिए वो पॉलिसी ले लेंगे उतने पीरियड के लिए आपको प्रीमियम पे करना है. इफ एनीथिंग हैपन्स ड्यूरिंग दैट पीरियड, आपको जितना अमाउंट आपने इंश्योर्ड किया होगा उतना अमाउंट आपको मिल जाएगा. अदरवाइज इफ नथिंग हैपन्स, आपका प्रीमियम फॉरफिट करना पड़ेगा या यू विल नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम दैट प्रीमियम. हम एंडोमेंट पॉलिसी में व्हाट वी आर सीइंग, अगर कुछ ड्यूरिंग दैट स्पेसिफिक पीरियड अगर कुछ नहीं होता है तो आपको लमसम अमाउंट वापस मिल जाती है. लेकिन टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको आपने जो प्रीमियम पे किया है, अगर ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड नथिंग इज हैपन, जो प्रीमियम आपने पे किया है वो हमें फॉरफिट करना पड़ेगा. And so you will not get anything from the premium what you have paid except the tax benefit available as per the respective tax law. Third is money back policy. एंडोमेंट पॉलिसी में हमने देखा था कि एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड यू विल गेट लमसम अमाउंट. व्हाट इज दिस मनी बैक पॉलिसी? इट इज सिमिलर टू एंडोमेंट प्लान्स. इट इज एज सेम, इट इज सिमिलर टू, नॉट सेम, it is similar to endowment plans, providing the policyholder with fixed payout at regular intervals during the policy term. It means, मान लो आपने अगर पॉलिसी ले ली है फॉर टेन्योर ऑफ 20 years अंडर मनी बैक पॉलिसी, देन वो आपको बता देंगे कि आपका जितना पॉलिसी अमाउंट आपने लिया हुआ है उसका 20% आपको 5 साल के बाद मिलेगा, 20% आपको 10 साल के बाद मिलेगा, 20% आपको 15 साल के बाद मिलेगा, एंड जो 40% अमाउंट प्लस बोनस जो बचा होगा यू विल गेट इट आफ्टर 20 years. सो इट इसमें मनी बैक पॉलिसी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट. आपको स्पेसिफिक पीरियड के बाद स्पेसिफिक पे आउट भी मिल जाएगा, एंड एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी यू विल गेट द बैलेंस पीरियड. So that is the reason it is as same as that of the endowment policy. Yeah, it is similar to endowment plans. It is providing policyholder with fixed payout at regular intervals during the policy period. And if the policyholder passes away, the full sum assured is paid to the beneficiary. लेकिन अगर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द पॉलिसी, अगर जिन्होंने इंश्योरेंस लिया है उस व्यक्ति को, इंश्योर्ड व्यक्ति को, अगर उसका अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो उनके जो नॉमिनी रहेंगे या जो बेनिफिशियरी रहेंगे दे विल गेट द एंटायर अमाउंट बैक. नेक्स्ट इज पेंशन प्लान इज वेरी पॉपुलर नाउअडेज. These policies are most suited for senior citizens and those planning for a secure future. So this is in brief about the life insurance products. Now we will go for general insurance products. What is the meaning of general insurance product? Those products which are other than health insurance and other than your life products are categorized as general insurance. It is any insurance that is not determined to be the life insurance. It comprises of insurance of property against fire. हम फायर इंश्योरेंस लेते हैं, बर्गलरी इंश्योरेंस लेते हैं, पर्सनल इंश्योरेंस लेते हैं, एक्सीडेंट इंश्योरेंस लेते हैं. इस तरह से जो हम इंश्योरेंस लेते हैं उसको जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट कहा जाता है. नाउ अभी तक हमने ये देखा कि इंश्योरेंस के लिए अलग अलग तरह के स्कीम्स हैं, अलग अलग तरह की कंपनीज हैं, बट हु इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स? सो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA, Insurance Regulatory and Development Authority, IRDA, is the regulatory body for insurance sector supervision and development in India. तो जैसे इंश्योरेंस सेक्टर के लिए जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, इट इज नोन एज IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. दे मे आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन ऑन दिस.
इंश्योरेंस बिजनेस ऑफ बैंक्स। अभी तक हमने इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में एक जनरल आइडिया ली थी। नाउ वी विल सी हाउ बैंक कैन एंटर इनटू दिस टाइप ऑफ बिजनेस। IRDA Regulations 2013 enables banks to take up the insurance broking business departmentally. Yeah, as per IRDA guidelines, bank department के through भी internally also they can initiate their insurance broking business. Bank can start their insurance activity. Banks are not allowed to undertake insurance business with risk participation departmentally. लेकिन अगर बैंक इंटरनली बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है या बैंक अगर कोई डिपार्टमेंट के थ्रू अगर इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट करनी चाहती है, इन दैट केस बैंक कैनॉट अंडरटेक इंश्योरेंस बिजनेस विथ रिस्क पार्टिसिपेशन बेसिस। अगर बैंक रिस्क पार्टिसिपेशन बेसिस पे बिजनेस करना चाहती हो तो उनको उसके लिए अपनी एक अलग सब्सिडरी ओपन करनी पड़ेगी या अलग जॉइंट वेंचर सेटअप करना पड़ेगा। So, as per IRDA Regulations 2013, it enables banks to take up the insurance broking business departmentally. Banks are not allowed to undertake insurance business with risk participation departmentally and may do so. It means may carry out business with risk participation only through a subsidiary or joint venture set up for that purpose. इंश्योरेंस बिजनेस विथ रिस्क पार्टिसिपेशन थ्रू अ सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर। अगर बैंक जॉइंट वेंचर के थ्रू या सब्सिडरी के थ्रू अगर इंश्योरेंस बिजनेस विथ रिस्क पार्टिसिपेशन बेसिस पे करना चाहता है तो व्हाट कंडीशन दे हैव टू फुलफिल। बैंक कैन अंडरटेक इंश्योरेंस बिजनेस विथ रिस्क पार्टिसिपेशन थ्रू अ सब्सिडरी और जो और or joint venture set up for the purpose subject to fulfillment of the eligibility criteria as certain as on 31st March of the previous year। तो अगर बैंक कोई रिस्क पार्टिसिपेशन बेसिस पे बिजनेस इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है बाय सेटिंग अप ए जॉइंट वेंचर और स्टार्टिंग ए सब्सिडरी, देन उनको कोई सर्टन कंडीशंस कंप्लाई करनी पड़ेगी and that criteria will be calculated on the basis of the balance sheet date, that is 31st March of the previous year। What is the first condition? In that case, bank को जो है, it has a net worth of 1000 crore and its minimum net worth shall not be less than 500 crore after investing in equity of such company। It means जो बैंक रिस्क पार्टिसिपेशन बेसिस पे बिजनेस करना चाहती है वो बैंक सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर स्टार्ट करेगी एंड जॉइंट वेंचर या सब्सिडरी स्टार्ट करने के लिए जो अपने फंड्स उसमें लगा देगी, तो वो फंड्स लगाने के बाद उनका नेटवर्क 500 करोड़ होना चाहिए एंड वो फंड्स लगाने के पहले बैंक का नेटवर्क 1000 करोड़ होना चाहिए। इट मींस जो बैंक इन्वेस्ट करना चाहती है उनका नेटवर्क एज ऑन 31st मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर इट शुड बी मिनिमम 1000 करोड़ एंड ऑफ दैट नेटवर्क जब वो जॉइंट वेंचर में सेटअप में इन्वेस्ट करेंगी, वो इन्वेस्ट करने के बाद बैंक के पास अपना खुद का 500 करोड़ नेटवर्क बचना चाहिए, रहना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इट्स लेवल ऑफ नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स not more than 3% and it made a net profit in the preceding 3 financial year। एक तो उनका नेटवर्थ 1000 करोड़ होनी चाहिए, उनके जो नेट परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो 3% से ज्यादा नहीं होने चाहिए एंड पिछले 3 साल में बैंक ने नेट प्रॉफिट अर्न किया होना चाहिए। The track record of the performance of subsidiaries, if any, is satisfactory। एंड बैंक ने अगर कोई सब्सिडरी दूसरी एस्टेब्लिश की है तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। These are the conditions that have to be fulfilled by the bank if they want to start the insurance business with risk participation by establishing a subsidiary or joint venture। Banks undertaking insurance broking or corporate agency by a subsidiary or joint venture। मान लो कोई अगर बैंक ये चाहती है
कि वो भले इंश्योरेंस ब्रोकिंग बिजनेस या कॉरपोरेट एजेंसी ही ले ले, लेकिन वो बिजनेस अगर वो सब्सिडरी फॉर्म करके या सेपरेट जॉइंट वेंचर फॉर्म करके अगर करना चाहती है, इन दैट केस a bank can set up a subsidiary or joint venture company for undertaking insurance broking or corporate agency by fulfilling the eligibility criteria on the similar terms of on the similar terms and conditions on as mentioned above. तो यहाँ तो हमने भी देखा था कि अगर बैंक कोई बिजनेस रिस्क पार्टिसिपेशन बेसिस पे करना चाहती है तो उनको ये 3 कंडीशंस कंप्लाई करनी। अगर बैंक इन द सिमिलर वे, अगर बैंक कोई इंश्योरेंस बिजनेस में एजेंट ब्रोकिंग, इंश्योरेंस ब्रोकिंग या कॉरपोरेट एजेंसी लेके बिजनेस करना चाहती है, इन दैट केस ऑल्सो उनको यही 3 कंडीशंस कंप्लाई करना जरूरी है, प्रोवाइडेड दे अंडरटेक दिस बिजनेस थ्रू सम सब्सिडरी और बाय सेटिंग अप ऑफ ए जॉइंट वेंचर। इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विस डिपार्टमेंटली, अगर बैंक डिपार्टमेंटली अगर इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, इन दैट केस ए बैंक में एट इट ऑप्शंस फंक्शन एज एन इंश्योरेंस ब्रोकर डिपार्टमेंटली सब्जेक्ट टू द कंडीशन मेंशन बिलो। अगर बैंक इंटरनली अपने थ्रू स्पेसिफिक डिपार्टमेंट अगर इंश्योरेंस बिजनेस करना चाहती है तो उनको द फॉलोइंग 3 कंडीशंस दे हैव टू कंप्लाई। There shall be a board approved policy encompassing including the model of insurance distribution to be adopted, and they should secure a license from IRDA for broking business. अगर बैंक इंटरनली थ्रू डिपार्टमेंट अगर इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो उनको उसके लिए एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, स्पेसिफिक पॉलिसी बनेगी, एंड दैट पॉलिसी विल बी अप्रूव्ड बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड साथ साथ उनको आईआरडीए से, इरडा से एक ब्रोकिंग बिजनेस करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस सिक्योर एक्वायर करना पड़ेगा। Once that license is acquired, उसके बाद a deposit of ₹50 lakh is to be maintained by insurance broker as per IRDA guidelines, with a scheduled commercial bank other than itself, and the deposit shall have a lien with IRDA। अगर उन्होंने लाइसेंस भी ले लिया, अगर वो बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, इन दैट केस उनको इरडा गाइडलाइन के मुताबिक 50 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ेगा, बट नॉट विद सेल्फ एंटिटी, बट दे हैव टू मेंटेन इट विद सम अदर शेड्यूल कमर्शियल बैंक, एंड उस डिपॉजिट के ऊपर इरडा अपना लीन मार्क करेगी। The bank shall ensure customer appropriateness and suitability as under। बैंक अपने, ये तो 2 कंडीशंस बैंक को दे themselves have to comply, एंड कस्टमर को सुटेबल पॉलिसी अडॉप्ट की जाए, कस्टमर को कन्वीनियंस दिया जाए, इस तरह से उनको क्या करना पड़ेगा। ऑल एम्प्लॉइज डीलिंग विथ इंश्योरेंस ब्रोकिंग एंड बिजनेस एजेंसी बिजनेस shall have the presence requisite qualification prescribed by RDI। जो कस्टमर को सुटेबल या कस्टमर के साथ अप्रोप्रिएट बिजनेस करने के लिए, कस्टमर को सुटेबल बिजनेस ऑफर करने के लिए हमारे जो एम्प्लॉयज होंगे उनके पास सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए। एंड इसीलिए जो भी एम्प्लॉयज इंश्योरेंस बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे उनके पास जो इरडा ने मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब किया है वो उनके पास अचीव किया होना चाहिए। दे मस्ट हैव क्लियर दैट एग्जामिनेशन। There shall be a standardized system of assessing the need and suitability of products for a customer, and the initiation or transaction process shall be segregated. There shall be a standardized system of assessing the need and suitability of products for a customer। वहाँ बैंक के पास एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम होना चाहिए, बिकॉज वो सिस्टम के थ्रू वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज कस्टमर की सुटेबिलिटी वो दोनों को असेस करेंगी, एंड साथ साथ इनिशिएशन बिजनेस जो है, इनिशिएशन प्रोसेस वो एक पर्टिकुलर ग्रुप करेगा, एंड ट्रांजैक्शन प्रोसेस विल बी डन बाय द सेकेंडरी ग्रुप या अनदर ग्रुप। सो देयर विल बी separate segregation between initiation and transaction process with the customer। Now, कॉरपोरेट एजेंसी ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, अगर बैंक कॉरपोरेट एजेंसी लेना चाहती है, इन दैट केस
Bank undertake corporate agency of insurance companies departmentally. We have already seen it. There is no need to obtain prior approval from RBI. Very important one. Prior approval from RBI. There is no need to obtain prior approval from RBI to act as a corporate agent on a fee basis without risk participation. Undertake insurance broking business activities departmentally means अगर बैंक इंश्योरेंस बिजनेस या बैंक इंश्योरेंस का ब्रोकिंग बिजनेस डिपार्टमेंटली स्टार्ट करना चाहते हैं इफ इट इज ऑन विदाउट रिस्क पार्टिसिपेशन बेसिस, इन दैट केस उनको आरबीआई से प्रियोर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है टू एक्ट एज एन कॉर्पोरेट एजेंट ऑन फी बेस्ड बेसिस. It means in that case, bank will act as a corporate agent and bank will charge fee for the business that they have offered to their customers from the. When bank becomes a corporate agent of an insurance company, it is called as a bank assurance arrangement or partnership. Very important from your examination point of view. They normally ask what is the meaning of bank assurance or fill in the blanks में ये question आ सकता है. Now, who are the corporate agents? Corporate agents can represent कोई एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेट एजेंट होगा. ही कैन रिप्रेजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वन, ही कैन रिप्रेजेंट थ्री लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में एजेंट रिप्रेजेंट कर सकता है, थ्री नॉन लाइफ इंश्योरर एंड थ्री स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर. इट मीन्स ये टोटल 9 कंपनियों का काम एट ए टाइम बैंक कर सकती है, जिसमें से मैक्सिमम 3 लाइफ इंश्योरेंस होगा, मैक्सिमम 3 नॉन लाइफ इंश्योरेंस होगा एंड 3 स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का एजेंसी ले सकते हैं. इसीलिए आप देखते हो बैंक के पास अलग अलग कंपनी की एजेंसी अरेंजमेंट रहती है. इन एडिशन, दे कैन रिप्रेजेंट द टू स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस कंपनीज, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एंड एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आल्सो. Marketing and distribution of life policies. Insurance companies use Insurance companies use the network of bank branches to reach the huge customer base available with the bank to garner more business, and further this helps banks to derive more fee-based income without risk participation. Abhi, what is the benefit of this for bank as well as for the insurance company? Insurance companies का क्या benefit है by offering this business to the bank? इंश्योरेंस कंपनी को ये ऑफर कि उनको बैंक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, बैंक के कंट्री के कॉर्नर, फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर जो ब्रांचेस है, उनका नेटवर्क इंश्योरेंस कंपनी को मिल जाता है. बैंक का जो वास्ट कस्टमर बेस है, उतना कस्टमर बेस तक इंश्योरेंस कंपनी अपना प्रोडक्ट पहुंचा सकती है एंड उसकी वजह से उनका अपना बिजनेस बढ़ सकता है. दिस इज द बेनिफिट फॉर द इंश्योरेंस कंपनी. व्हाट इज द बेनिफिट फॉर द बैंक? एक तो बैंक अपने वास्ट कस्टमर के साथ साथ बैंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए नए नए लोगों के साथ अप्रोच कर सकते हैं, जिनकी वजह से वो अपना कस्टमर बेस बना सकती है. अनदर थिंग, once any individual or any person has taken the insurance policy, he becomes the customer of that particular bank. एंड बैंक उसको अपने अलग प्रोडक्ट्स भी बेच सकती है, अलग प्रोडक्ट्स का भी बिजनेस कर सकती है, जो बैंक को अपना कोर बिजनेस बढ़ाने में हेल्प कर सकती है. प्लस बैंक इज डूइंग दिस बिजनेस ऑन फी बेस्ड बेसिस. दिस इज द फी बेस्ड एक्टिविटी. सो इसीलिए बैंक इज अर्निंग सम इनकम फ्रॉम दैट which is adding to the profitability of the company, and these activities they are carrying it out without risk participation basis, so there is risk factor is also very less. Now the more popular product is now group insurance product. आप कोई भी बैंक के पास चले जाइए, वो आपको बोलेंगे कि आप इसमें आप ग्रुप इंश्योरेंस का प्रोडक्ट ले लीजिए, आपको कॉम्पिटिटिव प्रीमियम में आपकी पूरी फैमिली कवर हो जाएगी. इस तरह से ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आर वेरी पॉपुलर इन बैंकिंग इंडस्ट्री इन अ कंट्री नाउ.
These products are offered by life insurer for specific and identified groups for providing life cover at a competitive premium as compared to regular policy. तो ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट में जो प्रीमियम रहता है वो कंपेयर टू रेगुलर पॉलिसीज के से बहुत कम रहता है, बिकॉज दे आर ऑफरिंग दिस पॉलिसीज फॉर पर्टिकुलर सेगमेंट। सो लार्ज वॉल्यूम का बेनिफिट इंश्योरेंस कंपनी को मिल जाता है एंड उसकी वजह से जो प्रीमियम है वो कम हो जाता है। सो कवर लाइफ कवर इज अवेलेबल एट अ वेरी लो प्रीमियम। As per IRDA guidelines, insurer offering group products must ensure that group is clearly defined and homogeneous. तो इरडा एज पर इरडा गाइडलाइंस जब कोई कंपनी इस तरह से ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर करते हैं तभी उनको ये देखना है कि जो ग्रुप उन्होंने कंसीडर किया है वो ग्रुप होमोजीनियस यानी सिमिलर एक्टिविटी वाला ग्रुप होना चाहिए एंड इट मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड दैट हु विल बी द मेंबर ऑफ दैट ग्रुप। Each member of the group must meet the defined criteria and deviations from this criteria will not be permitted. The important features of the group insurance products offered by the banks are discussed below. क्या है उनके features? Bank offers different group insurance cover to their customer as a value addition to their products offering or to their customers maintaining different types of accounts such as saving, current account holder or loan or borrower. तो बैंक जो है अपने अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स ऑफर करती है which is suitable as per the which is suitable for the specific category of customers, and this is nothing but the value addition to their product offering, ताकि बैंक ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं, वो विद इन दैट वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कस्टमर को मोटिवेट कर सकती है। दी ग्रुप कवर्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ये जो ग्रुप कवर है वो दो तरह का है। फर्स्ट टाइप ऑफ कवर इज अ सिंपल फिक्स कवर ऑन द हैपनिंग ऑफ नेचुरल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ एंड द अमाउंट ऑफ कवर इज फिक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। ग्रुप इंश्योरेंस कवर दो तरह के होते हैं। उसमें फर्स्ट में क्या रहेगा, इट्स वेरी सिंपल। जो भी पॉलिसी होल्डर है उनके लिए एक फिक्स अमाउंट का कवर अवेलेबल रहेगा ऑन अकाउंट ऑफ आइदर नेचुरल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ एज पर दैट पॉलिसी रहेगा एंड अमाउंट ऑफ कवर इज ऑल्सो फिक्स। सेकंड वन इज The second type of cover is dynamic cover. First is simple, second is dynamic. Especially this dynamic cover is offered to the borrowers, क्योंकि borrower का लोन बैलेंस जो है डे बाय डे कम होते जाता है, उनकी लायबिलिटी कम हो जाती है। इसके लिए डायनामिक कवर में जैसे जैसे लोन बैलेंस कम होते जाएगा इंश्योरेंस अमाउंट भी कम होती जाएगी एंड अकॉर्डिंगली प्रीमियम भी चेंज होता जाएगा। The second type of cover is a dynamic cover provided to borrower accounts on reducing basis in line with the repayment of the loan. The cover is made available for retail loans and housing loans with the mortgage backing. तो इसमें नॉर्मली जो अगर कोई व्यक्ति लोन ले लेता है, इफ लोन इज रीपेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 10 years, तो एट द इनिशियली सपोज उन्होंने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, after 1 year, the balance will come down to 90,000. After 2 years, balance will come down to 80,000. तो जिस तरह से उसकी लायबिलिटी कम हो जाती है उसी तरह से उनका कवर जो है वो भी कम किया जाता है। इट इज मैचिंग विद द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ द लोन, ताकि अगर कस्टमर को कोई हो जाता है, अगर कस्टमर का अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी विल रीपे द लोन। तो इसमें व्हाट इज द बेनिफिट, इसमें बैंक को ये बेनिफिट है, बिकॉज ऑफ दैट इंश्योरेंस कवर बैंक को अपना लोन एडजस्ट हो जाएगा। तो कस्टमर को क्या बेनिफिट है, बिकॉज ऑफ दैट इंश्योरेंस कवर कस्टमर की लायबिलिटी में वहां जो उनका लॉस हुआ है, दैट लॉस इमोशनल लॉस दैट कैनॉट बी रिकूप बाय एनीबडी, बट फाइनेंशियल लॉस जो हुआ है दैट विल बी मिटिगेटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी एंड दी कवर। एंड इस तरह का कवर नॉर्मली रिटेल लोन या हाउसिंग लोन में बैंक्स हमेशा इंसिस्ट करती है, जहां those loans which are secured by mortgage. Banks are offering a cover as a
tax facility for value enhancement of the product and also to elevate the customer satisfaction. In addition, being a risk mitigation tool for the customers and protection for the family of the account holder. मैंने डिटेल में आपको अभी बता ही दिया है. Distribution of non-life insurance products. Non-life insurance covers where non-life insurance covers various assets such as building, machinery, stock, etc., against which banks commonly lend. And this creates a captive market for banks to offer insurance to their products. What is the meaning of non-line insurance product? जैसे बैंक नॉर्मली सीसी ऑफ करती है, सीसी में जो स्टॉक रहता है उसके अगेंस्ट बैंक इंश्योरेंस करती है. तो जब भी कोई स्टॉक अलग अलग जो एसेट्स रहते हैं उनके अगेंस्ट प्रोवाइड करते हैं, जाके किसी के मकान के अगेंस्ट इंश्योरेंस करना है, प्लांट एंड मशीनरी के अगेंस्ट, फैक्ट्री के अगेंस्ट, जिसको बैंक नॉर्मली लेन करती है वो एसेट के अगेंस्ट भी बैंक इंश्योरेंस करवाती है. Banks are offering group health policies as a value addition टू देयर अकाउंट होल्डर्स. आपने ये भी देखा होगा बैंक्स नॉर्मली कहती हैं कि अगर आप हमारे पास सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपके लिए स्पेसिफिक अमाउंट का इंश्योरेंस हम कवर करते हैं. इट मे बी फॉर अकाउंट होल्डर और इट मे बी ऑन अ फ्लोटर बेसिस. फ्लोटर बेसिस का मतलब क्या है? फ्लोटर बेसिस का मतलब जितने अमाउंट का इंश्योरेंस है उस अमाउंट के लिए आपकी फैमिली कवर हो जाएगी. फैमिली कंसिस्ट ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड 2 चिल्ड्रेन. सो टोटल सभी का मिलके इंश्योरेंस कवर मैक्सिमम अमाउंट जितना इंश्योरेंस पॉलिसी का है उतना ही रहेगा. The policies are offered to the customer on a floater basis, covering the account holder, their families. Family consists of self, spouse, plus 2 children, and also parents on additional payment of premium at a low premium. अगर हमें उनके अपने पेरेंट्स भी उसमें ऐड करने हैं तो वी हैव टू पे सम एडिशनल प्रीमियम फॉर दैट. Now we will go for one scheme introduced by the government. The central government has introduced PMJJBY and PMSBY under the Financial Inclusion Program. Banks undertake agency business of these schemes. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल इंक्लूजन में ये दो स्कीम स्टार्ट कर दी है. फर्स्ट इज PMJJBY and second is PMSBY. What is the meaning of PMJJBY? Prime Minister Jeevan Jyoti Bima Yojana. Now let us go for this. PMJJBY, it is a life insurance scheme providing coverage for death ड्यू टू एनी कॉज. जो व्यक्ति ने PMJJBY में प्रीमियम पे किया हुआ है उनको लाइफ कवर किया जाता है. अगर ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर उनका डेथ हो जाता है so they will be paid a fixed amount by life insurance company. It offers 1 year coverage renewable annually. It is like term insurance premium policy. इसमें आपको 1 साल के लिए प्रीमियम पे करना पड़ेगा एंड जैसे ही वो साल खत्म होता है यू कैन रिन्यू योर पॉलिसी. तो जब तक आपकी पॉलिसी लाइव है सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस तब तक आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं. And is administered through LIC and other life insurance companies in partnership with banks subject to necessary approval. Abhi, what is the scope of coverage? All individual account holders of particular banks in the age group of 18 to 50 years will be entitled to join. And Aadhaar would be the primary KYC for the bank account. जो भी व्यक्ति का बैंक अकाउंट है एंड जिसका एज 18 से 50 साल के बीच में है वो इस स्कीम में ज्वाइन कर सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट. All individual account holders between the range of 18 to 50 years are entitled to join under this group. And इसके लिए अकाउंट ओपन करने के लिए आधार will be the KYC for bank account. Enrollment period. To be covered for the period from June 1st June to 31st May, subscribers must enroll and provide auto debit consent by May 31st of the policy starting year. So normally what is the covered period?
एनरोलमेंट पीरियड विल बी 1 जून टू 31 में, एंड इसके लिए बैंक ऑटो डेबिट कंसेंट देगी ताकि मई 31 तक, बाय मई 31 तक बैंक उसका प्रीमियम डेबिट करके रिकवर कर लेंगे। इसमें बेनिफिट कितना मिलेगा? हाउ मच इज द इंश्योर्ड अमाउंट? ₹2 lakhs इज पेएबल ऑन मेंबर्स डेथ ड्यू टू एनी कॉज। मेंबर का कोई भी कॉज से, कोई भी वजह से अगर मेंबर का डेथ हो जाता है, इन दैट केस उनको 2 लाख रुपए तक का कॉम्पेंसेशन दिया जाता है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹436 पर एन्यूम पर मेंबर। Termination of assurance. The assurance on the life of the member shall terminate on any of the following events and no benefit will become payable thereunder। कौन से सर्कमस्टांसेस में ये जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया हुआ है, ये जो पॉलिसी ली है, उसमें एश्योरेंस को टर्मिनेट किया जाता है, इंश्योर्ड व्यक्ति को टर्मिनेट किया जाता है। फर्स्ट कंडीशन, ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 55 ईयर। जब अकाउंट होल्डर या पॉलिसी होल्डर जो उनका 55 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, ही इज he will not remain the member of that scheme. So on attaining the age of 55 years or age near birthday, subject to annual renewal up to that date, entry will not be allowed beyond age of 50। It means आप स्कीम में 55 साल तक रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपको 50 साल कंप्लीट हो जाएंगे, आपको नई एंट्री नहीं मिलेगी। आपको 50 साल के पहले अगर आपने एंट्री ले ली है, देन यू कैन रिमेन इन दैट स्कीम अप टू द एज ऑफ 55 ईयर्स। लेकिन अगर आप नई एंट्री लेना चाहते हो तो आप 50 साल के बाद नहीं ले सकते हो। Closure of account with the bank or insufficiency of balance to keep the insurance in force। आपने अगर इन बिटवीन पीरियड अगर आपका अकाउंट बंद कर दिया, या आपको जो प्रीमियम पे करना है आपको बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ बैलेंस की वजह से आप अगर प्रीमियम नहीं पे कर पाए, इन दैट केस यू विल बी डिसकंटिन्यूड फ्रॉम द स्कीम। In case a member is covered under PMJJBI of LIC in India or other company through more than one account and premium is received by LIC or other company inadvertently, insurance cover will be restricted to ₹2 lakhs and premium paid for duplicate insurance shall be liable to be forfeited। इसमें आप कोई एक ही अकाउंट के थ्रू इसको मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक के मेंबर बन सकते हैं। अगर आपने एक से ज्यादा अकाउंट आपके बैंक अकाउंट हो एंड आप दोनों में से या सभी अकाउंट में से अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं, इफ यू गो फॉर दैट इंश्योरेंस स्कीम, इन दैट केस आपको 2 लाख रुपए तक का ही टोटल कवर अवेलेबल होगा। एंड जो अलग अलग अकाउंट से आपने प्रीमियम पे किया है उसको आपको फॉरफिट करना पड़ेगा, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। So these are the three things which everybody should be know aware about this PMJJBY scheme। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑन विच क्वेश्चन may be asked। So please try to remember it, and please try to remember it from not only from exam point of view, but because this is a scheme available at a low premium। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके पहचान के जितने भी लोग हों, स्पेशली दोज आर फ्रॉम lower middle class family or from poor family, please market it among them so that they can insurance their own life also, because now many of the persons are having their bank accounts but they might not be aware about the scheme। So as a social gesture, as a social responsibility, please convey this message to all your persons, all those persons to whom you know, so that if they wish, they can go for and take the benefit of this scheme। अभी तक हमने जितना डिस्कशन किया, उम्मीद करता हूं आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा। नाउ मैंने आपके लिए एक मैसेज लाया हुआ है। नाउ स्पेशली हम एज यूजुअल वी आर कंडक्टिंग द ऑनलाइन इंटरैक्टिव बैचेस। सो आप में से अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं हो जो CIB कर रहे हैं, यू कैन कन्वे दिस, यू कैन इन्फॉर्म दिस अबाउट दिस बैचेस। सो इफ दे विश, दे कैन गो फॉर इट। एंड इसके लिए डिटेल इंफॉर्मेशन हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी गई है। तो इफ यू रेफर टू दैट पर्टिकुलर लिंक, definitely the interested participant will get the detailed information about that।
तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपके अगर कोई फ्रेंड्स या कलीग जो CIB के लिए अपियर कर रहे हैं, दे कैन थिंक फॉर गोइंग फॉर दिस. So with this, we will continue our discussion here. But before that, we will have a 10 seconds break. During that, जो हमने अभी तक डिस्कशन किया है, प्लीज ट्राई टू रिकलेक्ट इट. अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल स्टार्ट फॉर क्वेश्चन एंड आंसर. द पर्पज ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर इज एज यूजुअल, हमारा ट्विन पर्पज रहता है. जब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, आपका अगर कोई डाउट्स है, वी कैन क्लियर दैट डाउट्स. एंड साथ साथ दिस इज नथिंग बट द रिवीजन. एंड जब हम आंसर करेंगे, अगर आप आंसर के साथ कंफर्टेबल हो, प्लीज मेक द यूज ऑफ चैट बॉक्स. दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ द पार्टिसिपेंट्स, so that it will give you confidence which will be helpful for your exam. So with this, have a 10 seconds break and then we will start for this question answers. A. Health insurance. Yeah. Uh, so let us start. Which category of insurance is described as emerging as the fastest growing segment in non-life insurance company? Yes, answer is absolutely right. Health insurance is the correct answer for this question. Next question. What is the primary objective of term insurance policy? टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? एक लो प्रीमियम में फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना है. दैट इज द मेन पर्पज ऑफ दिस. टू प्रोवाइड रेगुलर पे आउट ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, नो. टू ऑफर टैक्स बेनिफिट्स टू द टू ऑफर टैक्स बेनिफिट to offer tax benefits to the policy holder, to accumulate wealth for policy holder, to provide financial security to the nominees or beneficiaries in case of policy holders unexpected death. D is the correct answer for our question. What is the regulatory body responsible for the supervision and development of insurance sector? Insurance sector के लिए regulatory body कौन है? SEBI, RBI, IRDA or FHTC? C is IRDA. the correct. C is the correct answer. IRDA, Insurance Regulatory and Development Authority, is the regulatory authority for this. Ratan Prakash ji, Baldip Kumar ji, good to see you. Next. Sandeep ji, good to see you also. So, under IRDA regulations 2013, how can banks undertake insurance business with risk participation? Banks insurance business with risk participation किस तरह से start कर सकती है, किस तरह से initiate कर सकती है? Through departmental operations, through direct partnership with insurance companies, only through subsidiary or joint venture setup by obtaining a special license from IRDA. What we have seen, अगर बैंक रिस्क पार्टिसिपेशन बेसिस पे इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो उनको सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर सेटअप करना जरूरी है. सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. What is the minimum net worth requirement for a bank after investing in the equity of such company to undertake insurance business with risk participation through a subsidiary or joint venture?
अगर बैंक इंश्योरेंस बिजनेस विथ रिस्क पार्टिसिपेशन थ्रू सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर स्टार्ट करना चाहता है तो उसके इक्विटी में इन्वेस्ट करने के बाद बैंक का कम से कम कितना नेटवर्थ होना चाहिए। आफ्टर इज ऑल्सो हियर। तो कितना होना चाहिए? मिनिमम 1000 करोड़ बैंक का नेटवर्थ होनी चाहिए। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के लिए जब सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर सेटअप करेंगे उसमें इन्वेस्ट करने के बाद बैंक का नेटवर्क मिनिमम 500 करोड़ रहना चाहिए। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। What responsibility does the bank have regarding the suitability and appropriateness of insurance products sold to its customer? बैंक जब अप्रोप्रिएट एंड सुटेबल प्रोडक्ट इंश्योरेंस प्रोडक्ट कस्टमर को बेचती है तब बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट फ्रॉम इंश्योरेंस सेल, टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन, to sell insurance product regardless of customer needs, and to minimize competition from other insurance broker। क्या क्या कंडीशन है, क्या रिक्वायरमेंट है? बैंक को हमेशा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना जरूरी है। बैंक हैज टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन इंश्योरेंस ट्रांजेक्शंस। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now we will go for true and false. Health insurance companies can be divided into three categories: standalone insurance companies, health insurance companies for general insurance companies, and health insurance for from life insurance companies. What is the correct answer? Yes, हमने देखा था तीन तरह के हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस जो है तीन तरह की कंपनीज अंडरटेक कर सकती है। सम ऑफ देम आर स्टैंड अलोन इंश्योरेंस कंपनीज, some of them are health insurance from general insurance companies, and some of them are health insurance from life insurance companies. So this statement is a true। इस तरह के स्टेटमेंट्स में हमें नॉट ओनली ट्रू एंड फॉल्स हम कवर करते हैं बट वी कवर some of the multiple choice options also, so that will be helpful to us for this। Pension plans are most suited for young individuals who are planning for their future. This is not the correct statement. This is pension plans are suitable for senior citizens and those planning a secure future and not for young individuals. So next, banks are permitted to undertake insurance business with risk participation directly without a need for subsidiary or joint venture। हमने बार बार डिस्कशन किया है कि अगर बैंक रिस्क पार्टिसिपेशन बेसिस पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो उनको सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर सेटअप करना पड़ेगा। इट मीन्स दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। आवर आंसर इज फॉल्स। Banks are not allowed to undertake insurance business with risk participation directly. They may only do so through a subsidiary or a joint venture set up for that purpose. Next, to function as an insurance broker departmentally, a bank must maintain a deposit of rupees 15 lakhs to with the insurance regulatory at depart IRDA. This is the correct statement. Next question. What is the term used to describe the bank's role as the corporate agent of an insurance company? ये मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब बैंक इंश्योरेंस कंपनी के कॉर्पोरेट एजेंट फॉर इंश्योरेंस बिजनेस करके जब बिजनेस करती है, इट इज नोन एज अ बैंक एश्योरेंस अरेंजमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये वर्ड अगर इफ यू आर वर्किंग इन अ बैंक then you, and if you are directly or indirectly related with this insurance department, you must have heard this word for quite a large number of times. So bank assurance arrangement is the term used to describe a bank's role as a corporate agent for an insurance company. So A is the correct answer for our question. How many standalone health insurance can a corporate agent represent according to IRDA guidelines? IRDA guidelines के मुताबिक कॉर्पोरेट एजेंट करके कितने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में
कितने स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वी हैव सीन दैट मैक्सिमम 3. C was the correct answer. Which insurance scheme provides coverage for death due to any cause on yearly renewable basis? PMJJBY, PMSBY, LIC and IRDA. जो PMJJBY स्कीम लॉन्च की है, अंडर दैट स्कीम एक एनुअल प्रीमियम पे करना पड़ेगा एंड सब्जेक्ट टू, एंड जब तक आप उसको रिन्यूअल कवर रहेंगे, आपको मीन्स कोई भी इंश्योरेंस को इंश्योरेंस कवरेज फॉर ए फिक्स सम अवेलेबल रहता है. सो PMJJBY insurance scheme provides coverage for death due to any cause on a yearly renewable basis. A is the correct answer for this question. What is the payable benefit under the member's death under the PMJJBY scheme? PMJJBY स्कीम में कितना बेनिफिट मिलता है, कितना कवरेज रहता है? कवरेज इज 2 lakhs rupees is the coverage amount for this. B is the correct answer for this. Here आपने देखा होगा, नॉर्मली वी गो फॉर डायरेक्ट क्वेश्चंस इन आवर डिस्कशन बिकॉज डिस्कशन में वी कॉन्सेंट्रेट ऑन कंसेप्चुअल बेसिस. एक बार आपके सभी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, एक बार आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, देन क्वेश्चन में बी एनी फॉर्म यू विल बी एबल टू रिप्लाई दैट. दैट इज द रीजन वी कॉन्सेंट्रेट ऑन डायरेक्ट क्वेश्चंस हियर, ताकि आपका नॉलेज जो है बार बार अपडेट होता रहेगा. When does the assurance under the PMJJBY terminates? PMJJBY में जो अकाउंट होल्डर या जो इंश्योर्ड हो, उनका कॉन्ट्रैक्ट या उनको कब टर्मिनेट किया जाता है? On attaining the age of 50 years, on attaining closure, on account closure or insufficient balance, on member's death or all of the above? Yes, यहाँ जैसे ही अगर कोई व्यक्ति 50 ईयर्स का क्रॉस कर देते हैं, ही कैनॉट बिकम द मेंबर ऑफ द PMJJBY. देन अगर उनका अकाउंट क्लोज हो जाता है या इफ देर इज अ इनसफिशिएंट ऑफ फंड्स, देन इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट किया जाता है. अगर कोई मेंबर का डेथ हो जाता है तो उनको भी डिसकंटिन्यू किया जाता है. तो अगर हम ये देखते हैं तो हियर इट शुड बी नॉट 50 ईयर्स बट इट शुड बी 55 ईयर्स, बिकॉज 50 ईयर्स जो है 50 ईयर्स फॉर द एंट्री पॉइंट के लिए है, एंड वंस ए पर्सन अटेन्स द 55 ईयर्स ऑफ एज, उनको टर्मिनेट किया जाता है. सो व्हेन ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट एंड सी इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, प्रोवाइडेड वी शुड ट्रीट दिस एज 55 ईयर्स. So D is the correct answer for this. Which individuals are covered under the offered policies on a floater basis? फ्लोटर बेसिस पे जो पॉलिसीज ऑफर की जाती है, वो उसमें कौन से इंडिविजुअल्स कवर किए जाते हैं? ओनली अकाउंट होल्डर्स एंड देयर स्पाउस, अकाउंट होल्डर स्पाउस एंड अप टू 2 चिल्ड्रन, अकाउंट होल्डर स्पाउस अप टू 2 चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स ऑन एडिशनल पेमेंट ऑफ प्रीमियम. सो ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है. डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. We will go for true and false now. Banks can undertake corporate agency of insurance companies departmentally without obtaining prior approval from RBI subject to IRDA guidelines. Statement सही है. अगर बैंक डिपार्टमेंटली इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो उसके लिए RBI की prior अप्रूवल लेना जरूरी नहीं है. Banks commonly offer group insurance cover to their customers based on the type of accounts they maintain, such as saving, current, and loan account. This is also correct statement. Banks primarily offer fixed cover under group insurance policies without any dynamic cover option. This is not the correct option. Bank दो तरह की स्कीम ऑफर करती है, एक तो फिक्स कवर एंड अनदर इज डायनेमिक कवर.
फिक्स कवर में लमसम अमाउंट और फिक्स अमाउंट इज डिसाइडेड, एंड डायनामिक कवर में बोरोर अकाउंट में जैसे जैसे लोन अकाउंट का बैलेंस कम हो जाता है उनका रिस्क कवर भी कम हो जाता है. सो दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? Banks offer both fixed cover and dynamic cover under group insurance policies, with dynamic covers being provided to borrower account on a reducing basis in line with the repayment of the loan. So we have already discussed it. PMJJBY offers coverage to life insurance aged up to 18 to 50 years with a premium of 436 per annum per member payable on death due to any cause. So this is not the correct statement क्योंकि up to which year it is permitted? It is permitted up to 55 years old. So this is not the correct statement. Correct statement क्या है? PMJJBY offers coverage for individuals aged 18 to 55 years with a premium of rupees 436 per member per annum and payable on date due to any cause. तो उम्मीद करता हूं आज जो हमने अभी तक डिस्कशन किया है आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा. अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज प्रेस दिस लाइक बटन बिकॉज दिस विल बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी ऑल्सो. आपकी यही एक्टिविटी मेरे लिए नए नए वीडियोस बनाने में प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है. आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर दिस इंफॉर्मेशन. Please share this information with your friends and colleagues so that they can take the benefit of this. साथ साथ आपने अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएंगे एंड यू विल गेट द अपडेटेड इंफॉर्मेशन एंड यू विल नॉट मिस आउट एनी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ लाइव क्लासेस देखते हो एंड अगर आपको कोई डाउट हो या क्वेश्चन हो तो आपका क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स के थ्रू या इस मेल आईडी पे हमें कन्वे कीजिए. डेफिनेटली वी विल रिस्पॉन्ड इट इमीडिएटली. विद दिस we will conclude our discussion here today, and I wish you all the best and thank you very much.